Hello everyone. I'm Parikh, father of two lovely kids and to a loving woman. I'm an entrepreneur, now turned into a wealth coach, and I am on a mission to help 1 lakh families like yours to live a financially very free life and achieve financial freedom during your life. तो ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी का मिशन मैंने इनिशिएट किया है, उसी मिशन के तहत आज की जो ये लाइव वीडियो मैं कर रहा हूँ, that is part of my IPO series. And in today's video, I'm going to discuss about Jyoti CNC Automations Limited's IPO जो अभी आया हुआ है. तो let's try and analyze कि ज्योति CNC बिजनेस क्या है, IPO की वैल्यूएशन क्या है, peer comparison क्या है, so that the analysis information which I share with you through this video is help you to take a call whether you should invest into the IPO or not. तो चलिए देखते हैं कि ज्योति सीएनसी आईपीओ इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए क्या है। अगर इश्यू के बारे में बात करें, सो इट्स अ बुक बिल्ड इश्यू ऑफ रुपीज 1000 crore and it's entirely a fresh issue, which means the money received through the IPO after deducting the IPO expenses would go to the company for the objects which we'll be discussing in this video. It's not a offer for sale, मतलब कोई existing investor अपनी इक्विटी सेल करके पैसे नहीं इकट्ठा कर रहा है. जब पैसे जो इकट्ठा होंगे वो कंपनी के पास जाएंगे और ऑब्वियसली न्यू इक्विटीज बी गेटिंग इश्यूड, तो इक्विटी विल गेट diluted. IPO is opens on the January 9th and it closes on the January 11th. Allotment is expected to be finalized on the January 12th. It will be listed on BSE and NSE both, and expected date of listing is around January 16th. The price band is around 315 at the lower end and 331 at the higher end. Equirus Capital, ICICI Securities Limited, SBI Capital Markets Limited are the book running lead manager of the IPO, and LinkedIn India Private Limited is the registrar of the issue. ये बात हुई आईपीओ की. चलिए देखते हैं कि कंपनी क्यों पैसे इकट्ठा करने मार्केट में आई है, उसका उपयोग कहाँ करने वाली, वेयर इट इज गोइंग टू बी यूटिलाइजिंग. सो पहला जो ऑब्जेक्ट है यूटिलाइजेशन का, सॉरी, वो है रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ द सर्टेन बोरोइंग अवेल्ड बाय द कंपनी. तो कंपनी ने जो डेट ली है उसमें से रिटायर होने के लिए ये आईपीओ से पैसे इकट्ठा कर लिए. दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि फंडिंग लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको फंड करने के लिए. एंड ऑब्वियसली थर्ड इज द जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस. तो दीज आर द थ्री ऑब्जेक्ट्स जिसके लिए कंपनी मार्केट में आईपीओ लेके आई हुई. चलिए देखते हैं कंपनी क्या है, बिजनेस क्या है. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 1991 and it is one of the largest supplier of the CNC machine manufacturer supplier of the CNC machines in the India. The product range includes CNC turning center, CNC turning milling center, CNC vertical machining centers, CNC horizontal machining centers, simultaneous 3-axis CNC machining centers, simultaneous 5-axis CNC machining centers, and multitasking machines. The company's customer base includes Indian Space Application Center, that is ISRO, BrahMos Aerospace, Thiruvananthapuram, Turkish Aerospace, Uniparts India, Tata Advances System, Tata Sikorsky Aerospace, Bharat Forge, Shakti Pumps, Shriram Aerospace and Defense, Rolex Rigs, Engineers, Bosch Limited, HWE Hydraulics, Presto India, LG Rubber, and National Fittings and others. The company has a wide range of CNC machines with 200 types in 44 series. In the previous 3 financial years, the company has sold around 7,200 machines to more than 3,000 customers worldwide, including India, Europe, North America, and few parts of Asia. Since April 1, 2004, the company has delivered 30,000 CNC machines worldwide. The company distributes its products worldwide through Euron's established dealer network and also has 29 sales and service centers in Romania, France, Poland, Belgium, Italy, and UK. The company has 3 manufacturing facilities, 2 of which are located in Rajkot, Gujarat, and other in Strasbourg, France, which has the necessary capabilities to design, develop, and manufacturing the entire product line.
As of June 30, 2023, the company's production capacity was 4,400 machines per year in India and 121 machines in the France. As of June 30, 2023, the company has an order backlog of rupees 31,430.56 million, including an order of 2,602.50 million from an electronic manufacturing service company. As of June 30, 2023, the company had a total employee of 2,573. After understanding the business, let's try and do the SWOT analysis of the company. अगर हम strength के बारे में बात करें, तो it is the third largest CNC manufacturer in India by revenue. It has 10% in terms of revenue in the market share. Diverse clientele, manufacturing CNC machines for a diverse area of industries, including aerospace, defense, automotive, and other high-end engineering industries. अगर हम weaknesses की बात करें, तो it has a revenue concentration. H1 FY24 में top 10 customer accounted for 40% of the revenue. Right? It has a high working capital requirement. The cash conversion cycle is as high as 234 days in the FY23, and it has to rely on that for working capital requirement. But obviously, post IPO, the situation will change. Loss-making subsidiaries, it has incurred losses on consolidated basis in FY21 and 22 due to the losses incurred by the subsidiaries, and it has a high debt. The debt to equity ratio was 3.2 times as of September 2023, and its interest cover ratio is less than 1. So these are the four weaknesses. Risk factor, obviously weaknesses would translate into the risk factor. Customer concentration is one area of, subsidiary are making losses is another risk factor. Debt to equity ratio is higher is another factor. As of September 30, 2023, Jyoti CNC is has one of the lowest ROE and ROCE in its peer group. तो मतलब जो peer group companies है, LG Equipments, Lakshmi Machine Works, Crevin Turbine, TD Power Systems and Mac Power CNC Machines, इन उनकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी थी और रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी एम्प्लॉयड थी, वो उससे सीएनसी की कम आरओई एंड आरओसी थी. इवन प्राइस टू अर्निंग रेशियो एज अ डाइल्यूटेड ईपीएस, मतलब पोस्ट इश्यू जो इक्विटी होती है उसकी जो आती है 1.02. तो अगर हम उसको देखने जाए तो अगर हायर प्राइस बैंड पे जाएंगे तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वुड बी 324.51, और लोअर बैंड पे जाएंगे तो इट विल बी 308.82 टाइम्स. ये बहुत ही स्टीप वैल्यूएशन है. अगर हम फाइनेंशियल हिस्ट्री देखें तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू इंक्रीज फ्रॉम 580 to 929 in the FY23, and H1 FY24 half year it is 510. So it is growing at the rate of 26.6 CAGR. अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो हमने पहले भी बोला था कि इट मेड लॉसेस इन द 21-22 ड्यू टू इट्स सब्सिडियरी लॉसेस, बट FY23 ऑनवर्ड्स इट इज इनटू प्रॉफिट. FY23 में 15 करोड़ का था और H1 FY24 में 34 करोड़ का है. सो फाइनेंशियली इट इज इम्प्रूविंग, और इशू आने के बाद अगर पैसे के अच्छे से यूज करके डेट रिटायर करेगी तो थिंग्स विल इम्प्रूव बेटर. अगर हम पेयर कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं कि ईपीएस बेसिस पे भी ज्योति सीएनसी इज अमंग्स द लोएस्ट एज कंपेयर टू इट्स लिस्टेड पीयर्स. अगर हम एनएवी की बात करें तो वहां पे भी वो लोएस्ट है एज कंपेयर टू द लिस्टेड पीयर्स. प्राइस टू अर्निंग देखने जाए तो इट इज हाईएस्ट अमंग्स द लिस्टेड पीयर्स, और अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखने जाए तो इट इज थर्ड लार्जेस्ट रिटर्न ऑन नेटवर्थ अमंग्स द लिस्टेड पीयर. सो इट्स अ मिक्स बैग. समराइज करें आज की जो वीडियो है उसको, कि क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू देखने जाए तो उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल की एवरेज इज -33%, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसी इज 4%. It reported losses in FY22 and 21, and moreover it has a worrying debt to equity ratio of 3.2 times. ग्रोथ की बात करें तो हमने पहले भी देखा था कि रेवेन्यू इज ग्रू बाय 27% एनुअली, सो देयर इज अ ग्रोइंग मार्केट फॉर द कंपनी. सो अगर ये पैसे अच्छे से यूज करेगी तो इट विल बी मेकिंग गुड प्रोग्रेस इन सो फार एज प्रॉफिटेबिलिटी इज कंसर्न. वैल्यूएशन आर स्टीप, सो इट विल टेक टाइम टू रियलाइज प्रॉफिट आगे जाके. और अगर हम समराइज करें इसको आगे फ्यूचर क्या है, तो ग्रोथ इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड राइजिंग डिमांड फॉर हाई प्रिसिजन मशीनरी शुड ड्राइव ग्रोथ फॉर द कंपनी. However, high competitive intensity and working capital requirement and that are concerns. So you need to consider the
these issues while investing into or applying for the Jyoti CNC automation company IPO. तो आई होप आज की ये जो लाइव है वो आपको ज्योति सीएमसी के बारे में जानने में हेल्पफुल रही होगी। इफ यू विश टू फोकस ऑन कीपिंग एंड ग्रोइंग योर मनी, आप अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप मेरी चैनल को लाइक करिए और बेल आइकन को क्लिक करके, सो दैट यू कीप ऑन रिसीविंग नोटिफिकेशन। आप मेरे ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं planetwealth.in पे जाके, मेरे पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं सारे लीडिंग पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे जाके। आप प्लेनेट फाइनेंशियल फ्रीडम विद प्लेनेट वेल्थ सर्च करेंगे, यू विल गेट इट। अब मेरे से सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं, प्लेनेट वेल्थ पेज लाइक कर सकते हैं, या तो फाइनेंशियल वेलबींग ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और सबसे आसान इजी तरीका ये है कि यू कैन स्टोर 9328190022 इन योर मोबाइल, और फिर प्लेनेट वेल्थ करके स्टोर कर लीजिए, और फिर एक व्हाट्सएप मैसेज डालिए, ऐड मी और आपका नाम लिख के, सो दैट वी वुड बी एडिंग योर मोबाइल नंबर इनटू अवर फाइनेंशियल लिटरेसी ब्रॉडकास्ट ग्रुप, through which you will be receiving the newer content which I'll be creating to improve your financial literacy and investment decisions. But make sure you store the number, otherwise broadcast messages are not received if the number is not stored in the receiving mobile. तो ये देखिए आप। So once again, thank you for joining. I hope आज की ये लाइव आपको यूजफुल रही होगी। मिलते हैं अगले एक लाइव में, जहाँ पे मैं इधर कुछ नए आईपीओ या तो कुछ इन्वेस्टिंग लेसन लेके आऊंगा। बाय बाय, टेक केयर।